just a brief what we did just now. We consider a discrete time averaging system with an impulse response h of n is delta of n plus delta of n minus 1. इसका frequency response क्या बनता है? e raised to j omega by 2 cos of omega by 2. और इसको प्लॉट देख ले मैटलैब में. जी, so before break we were discussing this filter characteristics. We say it represents a low pass filter. It repeats after every 2 pi. Now to this filter, if we consider different inputs, like one of them is given here. तो अगर इस फिल्टर को हम क्या इनपुट दें, if the input to this system is a constant, that is a zero frequency complex exponential x of n is equal to k e raised to the power j0 n, which will be equal to k, that is a constant signal. Then output will be y of n is equal to h of e raised to the power j0 multiplied by k e raised to the power j omega naught omega 0 n, which will be equal to k, because if we put 0 here for omega in this equation, e raised power j0 by 2 equals to 1 and cos of 0 equals to 1. So h of e raised power j0 is 1 from this particular equation. So that is equal to k, which is equal to x of n. Because it's a low pass filter, and if we consider a constant signal which has a zero frequency, then output will be equal to the same input. On the other hand, if to the same system, if the input is a high frequency signal, then means put omega is equal to pi. High frequency signal frequency will be pi. So if we put omega is equal to pi, this will be h of e raised to power j pi multiplied by k times a raised to the power j pi n. Now we say that e raised to power j pi n equals to plus minus 1. When n is odd, it is minus 1, and when n is even, it is plus 1. Then again, if we put omega is equal to pi in this equation, so e raised to power j pi by 2 is equal to cos pi by 2 plus j sin pi by 2, which is equal to j. But if we put omega equals to pi, then cos pi by 2 equals to 0. So the frequency response for omega equals to pi from this equation equals to 0. So output will be equal to 0. As we say that in this case it's a low frequency low pass filter, so low frequencies are passed unattenuated with omega equals to 0, and the high frequencies with omega is equal to pi, output will be equal to 0. So we say thus this system separates out the long-term constant value of a signal from its high frequency fluctuations, and consequently represents a first example of frequency selective filtering, the topic that we will discuss later.
तो नेक्स्ट टॉपिक सिंपल है, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टरिंग. Frequency selective filtering means if you are interested to eliminate or suppress some frequency components, then we are interested in the frequency selection. So frequency selective filters are a class of filters specifically intended to accurately or approximately select some bands of frequencies and rejects others. So something which is, सर ये बैंड पास फिल्टर होता है? ये इसमें मुख्तलिफ टाइप्स है ना, लो पास, हाई पास, बैंड पास सारे आते हैं इसमें. वो फ्रिक्वेंसी जिनको आप पास करना चाहते हैं दे विल बी अलाउड, और जिनको आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, बाय रिजेक्शन वी जनरली कंसिडर इट एज अ नॉइज, अनवांटेड सिग्नल. जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको डिलीट करना है या उसको मिनिमाइज करना है, तो वी से इट इज अ frequency selective filtering. The use of frequency selective filter arises in a variety of situations, like for example, if noise in an audio recording is in a higher frequency band than the music or voice on the recording is, it can be removed by frequency selective filtering. Another important application of frequency selective filters is in communication system, जहाँ पे हम modulation की बात करते हैं. Low frequency signal is multiplied with a carrier which is a high frequency signal. तो फिर कैरियर को रिसीवर एंड पे filter out करते हैं. So generally we say carrier is a high frequency signal and a message signal is low frequency signal. So to obtain only a message signal on the receiver side, carrier is removed. So we say carrier high frequency signal है, तो receiver side पे the signal is passed through a low pass filter which allows the message signal and removes or filters out the carrier. So here we say, while frequency selectivity is not the only issue of concern in application, its broad importance has led to a widely accepted set of terms describing the characteristics of frequency selective filters. So in particular, nature of frequencies to be passed by a frequency selective filter varies considerably from application to application. So several basic types of filters are widely used and have been given names indicative of their function. For example, a low pass filter. So low pass filter means a filter that passes the low frequencies. ठीक है, low frequencies कौन सी हैं? Frequencies around zero and attenuates or rejects higher frequencies. Similarly, a high pass filter is a filter that passes high frequencies and attenuates or rejects lower ones. Similarly, a band pass filter is a filter that passes a band of frequencies, attenuates frequencies both higher and lower than those in the band that is passed. So in each case, we define different terms. Like say, the first term is cutoff frequencies. Cutoff frequencies are the frequencies defining the boundaries between frequencies that are passed and frequencies that are rejected. That is frequencies in the pass band and stop band. Pass band वो है जिसको में आपने frequencies को pass करना है, allow करना है system ने. Stop band वो frequencies हैं जिन frequencies को system ने stop करना है. So here we say that multiple questions arise in defining and assessing the quality of frequency selective filter. So how we assess the quality? First question is, how effective is the filter at passing frequencies in the pass band? Means जो आप इसको pass band कह रहे हैं, उसमें जो frequencies pass हो रही हैं उनके amplitudes क्या हैं? Similarly, second says, how effective is it at attenuating frequencies in the stop band? Stop band में जो frequency stop होंगी उनके amplitudes क्या होंगे? And the third term is, how sharp is the transition near the cutoff frequency? That is from nearly free of distortion in the pass band to highly attenuated in the stop band. अब यहाँ पे एक term use होता है transition bandwidth, कि जो आपकी transition क्या है कि आप एक से बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे, so जो transition it should be very sharp.
means from stop band to pass band or from pass band to stop band. So this transition must be very sharp. ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि फ्रॉम नियरली फ्री ऑफ डिस्टॉर्शन इन द पास बैंड, मीन्स पास बैंड में जो एम्पलीट्यूड डिजायर्ड है वही होना चाहिए, तो हाईली एटेन्यूएटेड इन द स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड में जिन फ्रिक्वेंसीज को आपने स्टॉप करना है उनका एम्पलीट्यूड इंतहाई कम होना चाहिए। So each of these questions involves a comparison of the characteristics of actual frequency selective filter with those of a filter with idealized behavior. So here first we consider ideal filters. So specifically an ideal frequency selective filter is a filter that exactly passes complex exponentials at one set of frequencies without any distortion and completely rejects signals at all other frequencies. So the first is a continuous time ideal low pass filter with a cutoff frequency omega c. So here we say omega c represents the cutoff frequency. So the frequency response for continuous time filter is represented by h of j omega, which is equal to 1 when we say magnitude of omega is less than or equal to omega c, or we say its amplitude is 1 when omega is between minus omega c and plus omega c and it is 0. Otherwise graphically it looks like this कि आपके पास जीरो फ्रीक्वेंसी है, देन बिटवीन माइनस ओमेगा सी एंड प्लस ओमेगा सी इट्स एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड अदरवाइज इट इज 0. तो between minus omega c and plus omega c we say it represents a stop pass band, and after omega c cutoff frequency we say up to infinity it represents a stop band. तो यहाँ पे अगर आप देख लें आइडियल केस है तो ट्रांजिशन बैंड विड्थ इज 0 because it straight away goes from pass band to the stop band. So omega g पे omega c पे जो frequency उसका amplitude maximum है, omega c के बाद उसका amplitude 0 है. So in this case ideal case transition bandwidth is 0. जबकि practically आपके पास transition इस फिगर को अगर आप देख लें तो इसमें आपके पास जो ट्रांजिशन कर्व है इट इज अ स्मूथ कर्व, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक. Similarly, second type is an ideal continuous time high pass filter. High pass filter is opposite of low pass filter. कि लो पास फिल्टर में जो पास बैंड है इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्टॉप बैंड, और जो स्टॉप बैंड इट इज कन्वर्टेड इनटू पास बैंड. सो इन केस ऑफ एक्सक्यूज मी सर, जी जी सही है आपने लैब का टाइम 12 तक ही रखा था, किसका टाइम? लैब सबमिट करने का टाइम। रात को गुजरे हुए 12 बजे थे, अभी उसको मैंने एक्सटेंड कर दिए तो आज रात 12 बजे हो गया. सर वो नहीं, जी आवाज बंद होगी आपकी. एक्सक्यूज मी सर. जी सर यहाँ पे ये माइनस ओमेगा सी इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, या हमें कैसे पता चलेगा क्या? इस सिग्नल के लिहाज से? ये जो फिल्टर पढ़ रहे हैं ना सर, इसमें से ओमेगा सी ओमेगा माइनस सी मतलब जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगा, ठीक या फिर जब ठीक है आप डिज़ाइन करेंगे, आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उससे जो वैल्यूज आएंगी कि एन पे एम्पलीट्यूड कम है और उसके बाद एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए. ठीक है, तो वो जब हम कहते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेड RLC सर्किट्स रिप्रेजेंट दिस, दे आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दिस फिल्टर्स, तो फिर उसमें RL और C की वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो आपका डिजायर्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी अचीव्ड. ठीक है.
कट जी ऑफ सर। फ्रीक्वेंसी, देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वही बताएगा ना जो डिज़ाइन कर रहा है, जो बना रहा है इस फिल्टर को, जिस एप्लीकेशन के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप ह्यूमन वॉइस के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन वॉइस की रेंज क्या है, फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। कि ऐसा फिल्टर बनाएंगे आप जिसमें ह्यूमन वॉइस पास हो सके और बाकी इससे हाई या लो फ्रिक्वेंसीज पास ना हो। ठीक, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बैंड पास फिल्टर, कि जिसमें लोअर बैंड पास की फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स होगी, और अपर बैंड पास की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है दैट विल बी 20 किलो हर्ट्स। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है इट इज़ इन द ह्यूमन ऑडिबल रेंज, आप सुन सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसीज भी आप नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा कम की फ्रिक्वेंसीज भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। ठीक है, तो जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो यू हैव टू डिज़ाइन इट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। So the second type is ideal high pass filter. सर जी जी जी। अगर हमारे पास इसी तरह ही फिल्टर हो ना, जिस तरह बैंड पास आपने कह दिया, और उसमें से 20 to 20 किलोहर्ट्ज हम फ्रिक्वेंसी पास करें, उसमें भी हमारे पास मतलब शोर है ना इसे, और उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर वो तो नहीं कर सकते। क्या मतलब 20 किलोहर्ट्ज के अंदर नॉइज है, लो फ्रिक्वेंसी? हाँ जी, मतलब अब 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक इसमें भी मतलब नॉइस है, हम उन उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो वो नहीं कर सकते। तो वो तो फिर आपको समझ नहीं आएगी ना, अगर वो फ्रिक्वेंसी उसी रेंज में, तो फिर तो वो नॉइस कंसिडर नहीं होगी, वो तो आपकी वॉइस के साथ सुपर इम्पोज हो जाएगी। सो इट विल नॉट बी लुक लाइक अ नॉइज। ठीक है, जी कि हाई सर। ठीक है, हाई पास फिल्टर इज गिवन बाय, इट इज इक्वल टू ज़ीरो, कब? जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा सी और माइनस ओमेगा सी के दरमियान होगी, एंड इट इज इक्वल टू 1 when omega is greater than omega c. So here you can see that between minus omega c and plus omega c, its amplitude is 1 and other 0, and otherwise it is 1. So again, between minus omega c and plus omega c, we say it is stop band, and after that it is a pass band. Similarly, a third type of filter is a ideal continuous time band pass filter, which is most commonly used. तो most commonly जो used है communication में, they are either band pass filters or low pass filters. So here we say h of j omega equals to 1, cup, when magnitude of omega is between omega c1 and omega c2, and it is 0. Otherwise, with the conditions, omega c1 must be greater than 0 and omega c2 should be greater than omega c1. So band pass filter is given by this equation. Omega c1 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, and omega c2 should be greater than omega c1. So we say it represents a band pass filter because it rejects between minus omega c1 and plus omega c1. Between omega c1 and plus omega c2 it allows or passes, and after omega c2 again it rejects. So अगर आप इन ऊपर वाली इक्वेशंस को देख लें, दो फिगर्स को, लो पास फिल्टर, so again a low pass filter is equivalent to a band pass filter because it also allows only a specific band of lower frequencies, the smallest frequencies, to be passed, and stops the high frequencies. So you can say it is a band pass filter. Low pass filter can also be defined in the terms of band pass filter. Similarly, high pass filter can be considered as a band stop filter because it stops a lower band of frequencies and allows the higher band of frequencies. So low pass filter is a type of a band pass filter, and high pass filter is a type of a band stop filter. So in a similar way we can represent the, सर आजकल ये काफी है। नहीं अभी तो बहुत काम रहता है, बीच में 1 घंटा ज़ाया भी हुआ है. So in a similar fashion we can define the corresponding set of ideal discrete time selective filters, the frequency responses of which are depicted in the figure below. Equations इसकी खुद लिख लें.
अब लो पास फिल्टर, अब डिस्क्रीट टाइम फिल्टर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का, कि डिस्क्रीट रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 पाई and continuous does not repeat. ठीक है, so when we say discrete repeats after every 2 pi, so between minus pi and plus pi, if we define a filter, then after that it will repeat. So ideal low pass filter, in case of discrete time, we say low frequencies are around 0. So omega c must be less than pi and greater than 0. So it is a pass omega c and plus omega c, and between omega c and up to pi it is 0. So as we said, repeats after every 2 pi. तो अगर 0 से लेकर माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी पे वैल्यू 1 है, तो जो वैल्यू 0 पे इट शुड रिपीट एट 2 पाई. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनता है 2 पाई से पहले, दिस इज 2 पाई माइनस ओमेगा सी, और इसके बाद जो कंप्लीट साइकिल का पॉइंट आएगा इट शुड बी 2 पाई प्लस ओमेगा सी. Similarly, in case of high pass filter, we say high frequencies are around odd multiples of pi. So ideal high pass filter means pi के आसपास जो values हैं, we say they will be 1 or pass band, and around 0 and even multiples of 2 pi it should be 0. तो अगर आप in case of high pass filter cut off frequencies को define करते हैं, तो we say this point will be omega c1, it should be greater than 0 and less than pi, and then we define another term, that is omega c2, which should be greater than pi and less than 2 pi. So between omega c1 and omega c2, this will be a pass band, and otherwise it will be a stop band. So again, if you see the periodic pattern of this function, इसको plot करें तो at 3 pi it should repeat, then at 5 pi, and then 7 pi. The third type is a band pass filter. So again, in this case, we say band pass means ना तो उसमें low frequencies pass होनी चाहिए ना high frequencies. So around 0 amplitude is 0 in case of filter gain, and around omega equals to pi, filter gain is also 0. ठीक है, and same is true for between pi and 2 pi. So a band of frequencies in which case we say omega is greater than 0 and less than pi, cut off frequencies. Again इसमें हम omega c1 और omega c2 कहेंगे. So omega c1 must be greater than 0 and omega c2 should be less than pi. So we say it represents a band pass filter. Similarly, band reject filter अगर होगा तो इसी का inverse लेना है कि जहाँ पे ये stop band है, this will be then a pass band, और जहाँ पे ये pass band है, it will be a stop band. That will represent a band reject filter, because it will allow the lower frequencies around 0, and then it will also allow the higher frequencies around pi. In between जो portion बनेगा frequencies का, those set of frequencies will be rejected, and that will be defined as a band reject filter. अभी तक इस filtering में कोई question है basic? नहीं है तो मैं आगे जाऊँ. ये फिल्टर्स दोबारा डिटेल में डिस्कस होंगे चैप्टर नंबर 4 में और 5 में भी. अब एक टॉपिक हमने शुरू में छोड़ा था, लेक्चर नंबर 10 का पार्ट था, कॉन्टीन्यूस टाइम फिल्टर्स डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब किस किस्म के फिल्टर्स हैं विच आर represented by the differential equations? So generally we say RLC circuits are used to implement the filters in electrical systems. ठीक है, so we say that they are represented by the differential equations. तो differential equation